Hello students, in this lecture let us solve problems based on Kirchhoff's second law, that is voltage law, which states that the algebraic sum of potential differences plus algebraic sum of all EMFs is equal to 0. Textbook question number 10. A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. The combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through the external resistance. To solve this problem, we have to prepare circuit diagram. This circuit diagram is prepared according to given condition. Two batteries with their like poles connected together. तो यहाँ पे दो सेल है E1 and E2. Their like poles means positive terminal is connected to positive terminal and negative terminal is connected to negative terminal. But यहाँ पे हम लोगों ने resistance दिखाया है. These resistances are internal resistance of this cell. तो यहाँ पे according to given condition ये combination हम लोगों ने prepare किया. Now next, this combination is used to send current through an external resistance 2 ohm. तो ये combination जो बना है, it is used to send current through external resistance R. So according to given condition this circuit is prepared. Now अभी करंट की डायरेक्शंस कैसे लेंगे? तो सेल E1 सेंड्स करंट I1, सेल E2 सेंड्स करंट I2. दिस इज जंक्शन C. अराइविंग करंट एट द जंक्शन C उसका टोटल है I1 प्लस I2. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ लिविंग करंट मस्ट बी सेम. तो यहाँ पे जंक्शन C से लिविंग करंट जो है वो है I1 प्लस I2 and this current will pass through external resistance R. अभी यहाँ से करंट पास होगा at this junction G. Again this current will split up into two paths. I2 will pass through this branch and I1 will pass through this branch. तो यहाँ पे हम लोगों ने करंट के डायरेक्शंस भी ले लिए. Now we can frame loop, for loop we can frame equations and from that we can solve this problem. Let us write given values. E1 4 volt, E2 1 volt, internal resistance R1 1 ohm, internal resistance R2 1 ohm and external resistance 2 ohm. To find current through external resistance R, its value is I1 plus I2. See this electric network, current passing through external resistance R is I1 plus I2. So we are asked to calculate this value. Solution. To solve this we are going to apply Kirchhoff's voltage law. Summation of IR plus summation of E is equal to 0. Now here we are going to see first loop A, B, C, G, A. Applying KVL to loop A, B, C, G, A. See, first resistance in this loop is R1. Current passing through R1 is I1. So product is I1 R1. I1 R1. But अभी उसको नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है? We are tracing loop from A to B and the direction of current is also from A to B. So this product should be negative according to sign convention. आगे जाते हैं तो रेजिस्टेंस मिल रहा है R2. करंट पासिंग थ्रू R2 इज I2. सो प्रोडक्ट इज I2 R2. दूसरा प्रोडक्ट है I2 R2. नाउ हियर वी आर ट्रेसिंग लूप फ्रॉम C to G and the direction of current is from G to C. अपोजिट है तो इसलिए ये प्रोडक्ट रहेगा पॉजिटिव. अभी summation of IR हो गया because here there are only two resistances in this loop. अभी summation of E के लिए two cell are there.
अब इस सेल को ट्रेस कर रहे हैं हम लोग A to B, मीन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो EMF ऑफ सेल शुड बी पॉजिटिव. सेकेंड हम लोग को EMF मिल रहा है E2. वी आर ट्रेसिंग लूप फ्रॉम C to G. देखो ये जो है ऐसे लूप ट्रेस कर रहे हैं ना, तो C to G. तो यहाँ पे वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल. सो यहाँ पे सेल का वैल्यू रहेगा नेगेटिव, बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. एंड यहाँ के पूरे जो सेल थे दोनों हो गए, तो दिस टोटल मस्ट बी 0. नाउ सब्स्टिट्यूट गिवन वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. Therefore, minus I1, small r1 is 1 plus I2, R2 is 1 ohm plus E1, its value is 4 volt, minus E2, its value is 1 volt and total is 0. Now simplify this and arrange equation. Simplifying it, we get equation or value of I1 as 3 plus I2. Let this be equation 1. Same way we are going to apply KVL for second loop G, C, D, F, G. We get equation minus I2 R2 minus I1 plus I2 into R plus E2 is equal to 0. कैसे देखो, यहाँ पे G to C जब जा रहे फर्स्ट रेजिस्टेंस है R2, direction of stressing and direction of current is same, so product is negative. Next resistance is external resistance R. Now current passing through R is I1 plus I2. Product is I1 I2 into R. And see, direction of current is from D to F and we are tracing loop from D to F. So this product is again negative. अभी बचा सेल. तो सेल देखो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो E2 का वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा एंड टोटल मस्ट बी 0. नाउ सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज. सब्स्टिट्यूटिंग गिवन वैल्यूज वी गेट दिस इक्वेशन. नाउ सिंप्लीफाई इट. वी गेट इक्वेशन 2I1 plus 3I2 is equal to 1. Let this be equation 2. Now substitute value of I1 which is equal to 3 plus I2 in equation 2. So here I1 का वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया जो कि है 3 plus I2. Now simplify it. I2 we get minus 1 ampere. Substitute the value in we get I1 3 plus I2. तो सब्स्टिट्यूट I2 का वैल्यू जो कि -1 है एंड वी गेट वैल्यू ऑफ I1 एज 2 एम्पियर. Therefore current through external resistance R is which is equal to I1 plus I2. Now substitute value of I1. I1 is 2 ampere, I2 is -1 ampere. So total is 1 ampere. So this is our final answer. Current through the resistance R is 1 ampere. So this is final answer. See one more problem. First you try this and then see its answer.